Hello students, I hope all of you are well due to God kindness. Today we will discuss on the topic eigen values and eigenvectors in matrix. What are eigenvalues and eigenvectors? The roots of the given matrix A whose characteristic equation is determinant A minus lambda I is equal to 0 is called eigenvalues of square matrix A. Eigenvalues are also known as proper values, characteristic values, latent value roots, or spectral values. If there exists non-zero vector x corresponding to eigenvalues lambda of square matrix A such that A minus lambda I x equal to 0, then x is called eigenvector of square matrix A corresponding to eigenvalue lambda. Eigenvectors are also called proper vectors, characteristic vectors, latent vectors, spectral vectors. The set of eigenvalues is called spectrum. Now, question based on eigenvalues and eigenvector. Find eigenvalues. Number 2, eigenvectors. Number 3, spectrum of given matrix 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Solution. सबसे पहले let this matrix is A. Characteristic matrix formula is A minus lambda I. Put values here A minus lambda I, solve minus lambda 1 1 1 minus lambda 1 1 1 minus lambda. Characteristic equation, the formula for characteristic equation is determinant of A minus lambda I equal to 0. Now matrix A minus lambda I is this one, its determinant is straight line equal to 0. Solve the determinant. How we will solve the determinant? Suppose this is 0 1 1 1 0 1 1 1 0 determinant. We want to solve it by R1, then sign is plus minus plus, so 0, it's minor, leave that, this one and this one, column and row of 0, this is row and this is column, then remainder is 0 1 1 0 minus 1, leave this one and this one, 1 1 1 0 plus 1, leave column of this and row of this one and column of this one, 1 0 1 1, solve it, 0 2 by 2 determinant is solved by this method, this minus this, 0 into 0 0 minus 1 minus 1 1 into 0 0 1 into 1 1 minus 1 plus 1 1 into 1 1 minus 0 then 0 minus 1 minus 1 minus 1 plus 1 1 0 into something 0 minus minus plus is equal to 2.
We will solve the determinant by this method. Now here this is determinant, solved by r1 minus lambda, this into this lambda square minus 1, leave this one, this row and this column, 1 1 1 minus lambda, 1 into minus lambda, 1 into 1 minus 1 plus 1, leave this one, this column and this row, 1 plus lambda. This is the equation. Divided by minus sign, then equation will become lambda cube minus 3 lambda minus 2 equal to 0. Now we will solve this equation by hit and trial method. First of all, put lambda equal to minus 1. Minus 1 is satisfying this equation, therefore lambda equal to minus 1 is the root of the equation first by synthetic division. What is synthetic division? Lambda cube, here lambda cube minus 3 lambda minus 2, we can write it as 1 lambda cube plus 0 lambda square minus 3 lambda minus 2, then coefficients are 1 0 minus 3 minus 2. This is called as synthetic division. We will divide it by minus 1. First blank as it is, multiply this one and this one, 1 into minus 1 minus 1, add minus 1, multiply this and this, minus 1 into minus 1 plus 1, add minus 2, multiply this one and this one, 2, add 0, leave this one, this is coefficient of lambda cube, this is lambda square. Now this is coefficient of lambda square, 1 degree less हो जाएगा, lambda constant. So equation becomes 1 lambda square minus 1 lambda minus 2 equal to 0. Then solve this by quadratic formula, and we will, in this way we can solve the cubic equation. Now here equation is characteristic equation becomes lambda cube minus 3 lambda minus 2 by hit and trial method. Put lambda equal to 1, lambda equal to minus 1 satisfy this equation, so lambda equal to minus 1 is root of this equation by synthetic division, as I discussed just now. Equation becomes lambda square minus lambda minus 2 equal to 0. Now we can solve the quadratic equation by quadratic formula. Here a is equal to 1, coefficient of lambda square is a and coefficient of lambda is b and constant is c. Lambda equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Solve this, we will get lambda equal to 2 minus 1. In this way lambda has 3 values because it is cubic equation, so value of lambda will be 3, lambda equal to minus 1 and lambda equal to minus 1 and 2. Therefore eigen values are minus 1 and 2. जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही आइगन वैल्यूज कहलाती हैं, और इन आइगन वैल्यूज को अगर हम किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. नाउ कैलकुलेशन फॉर आइगन वेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द आइगन वेक्टर फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज. हियर देयर आर टू सेम वैल्यूज -1 and -1 and one is distinct value, that is 2. First of all we will find the eigen vector for lambda equal to 2. We know a minus lambda I x equal to 0. This is the formula for eigen vector. Put lambda equal to 2 and put here in this equation a minus lambda I
a minus lambda I, answer is minus lambda 1 1 1 minus lambda 1 1 1 minus lambda. Put here 2, put lambda equal to 2 here, then it will become a minus 2 I become minus 2 1 1 1 minus 2 1 1 1 minus 2, and let x equal to x1 x2 x3 and 0 vector equal to 0 matrix equal to 0 0 0. Multiply this one, we'll get independent equations. Independent equations are minus x1 x2 x3 लगा देने के साथ, means we will multiply this row by this column and this row by this column and this row by this column and equal to 0. Minus 2x1 plus 1x1 x2 plus 1x3 equal to 0. 1x1 minus 2x2 plus 1x3 equal to 0. 1x1 plus 1x2 minus 2x3 equal to 0. These are independent equation. Solving first and second, any two, solve any two. Solve any two, then we will get this x1 upon 1 plus 2, x2 upon 1 plus 2, x3 upon 1 plus 3. How we will solve? We will solve by this one. There are two equations. Right coefficient of this minus 2 1 1. I am solving first and second equation. Then their coefficient are 1 minus 2 and 1. Right here x1 x2 x3. Now first इसको छिपाएं, this into this minus this into this, 1 into 1 1 minus 2 into 1 minus 2. तो इसके आंसर में से इसका आंसर माइनस करना है, तो 1 plus 2. x2 के नीचे क्या आएगा, इसमें आप उल्टा करेंगे, इसके आंसर में से 1 into 1 1, इसके आंसर में से इसका आंसर माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, तो इसका आंसर है 1, इसका आंसर है माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस. फिर इसको छिपाएं पहले वाले की तरह से, इसके आंसर में से इसका आंसर माइनस करेंगे, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, 1 इंटू 1 1, 4 माइनस 1 4 माइनस 1. तो इस तरह से अगर 2 इक्वेशंस हो और 3 वेरिएबल्स हो तो ऐसे सॉल्व करते हैं. सो x1 upon 3, x2 upon 3, x3 upon 3. We can short this one. These will get cancelled by 3. So x1 upon 1, x2 upon 1, x3 upon 1. Eigenvector for lambda equal to 2 is 1 1 1. इनको जो x1 x2 x3 के नीचे लिखा हुआ है इनको कॉलम में लिख दें, तो ये एक आइगन वेक्टर आ गया corresponding to lambda equal to 2. Now we want to find out eigenvector for lambda equal to -1 1 and -1. We know a minus lambda I x equal to 0. तो put lambda equal to -1, तो minus minus plus a plus I into x equal to 0. In the very same way, in this characteristic matrix, put lambda equal to -1, we will get this equation x equal to x1 x2 x3 0. So here take only one independent equation. First x1 plus x2 plus x3 equal to 0. इसमें क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 2 है, -1 एंड -1,
तो आइगन वेक्टर फॉर फर्स्ट लैम्डा इक्वल टू -1 पुट x2 इक्वल टू 0, x2 को 0 पुट कर दिया तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, 1x1 इक्वल टू -1x3 और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 1 इसके नीचे चला जाएगा और ये x3 के आगे -1 है वो x1 के नीचे आ जाएगा और x2 के वैल्यू कितनी थी यहाँ पर क्या पुट किया था 0, तो x2 के नीचे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से -1 0 1 को फिर कॉलम के अंदर लिख लेंगे। तो ये आपका आइगन वेक्टर फॉर फर्स्ट लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए आज आ गया है। नाउ आइगन वेक्टर फॉर सेकंड लैम्डा इक्वल टू -1 पुट x3 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x3 को 0 पुट किया, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, 1x1 इक्वल टू -1x2, ये इसके नीचे ये इसके नीचे और फिर x3 के नीचे 0 आ जाएगा, x1 अपॉन -1 x2 अपॉन 1 x3 अपॉन 0। आइगन वेक्टर फॉर सेकंड लैम्डा इक्वल टू -1 इज -1 1 0, इनको कॉलम में लिख दिया। सो आंसर इज आइगन वैल्यूज 2 -1 1 -1 एंड आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग ये आ गया। दिस इज द आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास आइगन वैल्यूज 2 3 5 आती है दैट इज डिस्टिंक्ट आती हैं, तो आपके आइगन वेक्टर कौन से मेथड से निकलेंगे, जो आपने स्टार्टिंग में निकाला था आइगन वेक्टर फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2, जो क्वेश्चन मैंने अभी समझाया था आपको, उसमें जो लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 2 -1 एंड -1, तो जैसे लैम्डा इक्वल टू 2 का आइगन वेक्टर निकाला, ऐसे ही तीनों के केस में लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल टू 5 के केस में सेम ये वाला स्टेप रिपीट करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ एग्जांपल लेके, अगर ये केसेस आपकी हो जाएं तो अगर आपकी आइगन वैल्यूज किसी मैट्रिक्स की 2 -1 और -1 आ रही हैं, तो जैसे मैंने अभी पीछे बताया तो वैसे निकालेंगे। उसमें कैसे, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए लाइक फर्स्ट और -1 और -1 के लिए एक कंसीडर ओनली वन इंडिपेंडेंट इक्वेशन एंड एक बार x2 को 0 पुट करें, एक बार x3 को 0 पुट करें, तो दो आपके सेम आइगन वैल्यू के आइगन वेक्टर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी आइगन वैल्यूज 3 सेम आ रही हैं -1 -1 -1, तो आपने वन इंडिपेंडेंट इक्वेशन कंसीडर करनी है और एक बार x1 को 0 पुट करना है, एक बार x2 को 0 पुट करना है, एक बार x3 को 0 पुट करना है। इस तरह से आप अगर आइगन वैल्यूज 3 सेम आती है तो उसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आइगन वैल्यूज के ये यहाँ पर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कैले हैमिल्टन थ्योरम को डिस्कस करूँगा। तो अब के लिए इतना ही, थैंक यू।